Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. After 5th of Jan, second date is Feb 28th, and on Jan 5th, Nifty formed the highest high of 26,373, and today on Feb 28th, fear factor is at the top. I am not saying buy, I am not saying sell, but this is an impact of powerful dates. Jan 5th, the first date of 2026, and Feb 28th is the second powerful date. What happened? US and Israel attack Iran, और तेहरान ने उसका जवाबी कार्रवाई भी बहुत स्ट्रांगली की, और कहा जा रहा है कि ट्रम्प्स Iran strikes mark his biggest foreign policy gamble. This gamble is high risk, high reward activity, और ट्रम्प ने भी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की बात की by attacking the Iran. It is Saturday morning. By Monday morning, there will be more clarity how the things are going to shape up. What the President Trump said, the lives of courageous Americans hero may be lost, but we are doing this not for now. We are doing this for the future, and it's a noble mission. लगातार पिछले 3 माह से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि 2026 में we are going to witness large swings, higher highs and lower lows. That is quite possible. और इस वर्ष में जो मिड इलेक्शंस यूएस में होने जा रहे हैं नवंबर में, वो भी वॉलेटिलिटी में और अधिक फ्यूल डालेंगे. ये नहीं है कि पूरा वर्ष मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहेंगे, पर एक्शन रहेगा विद कंसोलिडेशन एंड पॉज फॉर फ्यू डेज और मंथ्स. मैं फिर एक बात जरूर दोहराऊंगा कि देयर शुड नॉट बी ईगो. मैंने पिछले वीडियो में बिफोर देयर वॉज ए फॉल ऑन फ्राइडे मैंने कहा कि अगर प्राइस ट्रेंड डिसाइडर के नीचे है, इट मे बी अ रॉन्ग डिसीजन, बट यू हैव टू टेक द डिसीजन व्हेन प्राइस इज बिलो द ट्रेंड डिसाइडर. इफ यू आर नॉट सेलिंग, फाइन, but don't hold your buy positions. Go by the flow. There may be the possibility कि आप ट्रेंड डिसाइडर के नीचे सेल करें और प्राइस ऊपर जाने लगे. यू कैन कीप द स्टॉप लॉस. और whipsaw से बचने के लिए what I have mentioned in hurdle ratio, please follow it. You will be saved most of the time. This all I am saying to myself, not addressing to anyone else. If we can train our mind the way ringmaster train lion, I'm not saying the horses, I'm not saying that elephants, I'm saying lions. If we can train our mind, we will be able to perform. Why it is so important? Because stock trading is a mind game. Mind it. It is a mind game. With these words, lots of love, blessings, happy trading and happy investing to all my students.